अच्छा, हमने पैसिव्स स्टार्ट किए हुए थे, राइट? जिसकी वजह से तकरीबन हम सभी पैसिव हो रहे थे। तो हम लोग उसको थोड़ा-सा मज़ीद आगे लेके जाना है अब, लेकिन लेट्स लेट्स सी वेयर वी स्टैंड टुडे। सो अम, आप लोगों को अभी तक ये समझ आ गया होगा कि अगर आपके पास एक फ़ेल है, लेट मी टेक अ ईज़ियर वन, लेट्स से अस्लमा, even easier one, let's say kafara. You are able to tell this is past. You are able to tell there is a pronoun inside it. You are able to tell which pronoun is inside it. And you are able to tell if it is active or is it passive. जी। ठीक है? आपको ये पता है कि active fail है. Yeah. You also know how to convert this past fail into a passive fail, which you know that there is a oo sound in the beginning. The second last letter takes the kasra and the last letter doesn't change. चेंज Kufira. कुफर। ठीक है? इसी का प्रेजेंट टेंस yakfuru. यक You know the same things and you know how to convert it to passive. युकफरु। Yukfar. Yukfar. ठीक है? आखिरी को छेड़ना नहीं है, पिछले को छोड़ना नहीं है। ठीक है? जो लास्ट टाइम हमने देखा था। सही है? तो you know the principle of how to convert things. अगर कोई लॉन्गर फेल आ जाए, फॉर एग्जांपल हमने देखा था इस्तगफरा। इस्तगफरा ये पास्ट टेंस है। इसको कन्वर्ट करने का मैकेनिज्म हमने देखा था। सेम मैकेनिज्म, you keep on giving the oo sound wherever there is a haraka until you reach the second last letter. ठीक है? So it's going to be उस्तोफिरा। ठीक है? जहाँ पे भी सुकून है वहाँ आप कुछ नहीं करते, जहाँ पे हरका है वहाँ पे आप ऊ लगा देते हैं। सेकंड लास्ट इज ऑलवेज टेकिंग ई एंड द लास्ट वन इज नॉट चेंजिंग। ठीक है? यस्तगफिरु ये भी हमने देखा था। ठीक है? ये प्रेजेंट टेंस है। इसमें क्या था? इसमें शॉर्टर ऊ साउंड थी। इसमें सिर्फ एक ऊ साउंड थी, बट बाकी सारी जगह फतहा में चेंज हो जाता था वो। सो यू यूज्ड टू डू यू, जहाँ पे सुकून है आप कहीं पे चेंज नहीं करते। जहाँ पे कोई और हरका है वहाँ पे आपने उसको फतहा कर देना है। ठीक है? यहाँ पे ता के ऊपर फतहा ही था, गैन के ऊपर कुछ नहीं है, वी लीव इट। फा के ऊपर फतहा है, कसरा इट विल चेंज टू फतहा and then the last one doesn't change. Yustaghfar. That was the principle of the present tense. ठीक है? अब हमने कुछ चीजें पढ़नी है इसी डायरेक्शन में, थोड़ी सी आगे जाके। हमने ये भी देखा था इनमें कि आपके पास कॉन्सेप्ट होता है एक्टिव में होता है डूअर, राइट? जी। इनसाइड ओ सॉरी डूअर। इनसाइड और आउटसाइड बोथ पॉसिबल, राइट? जी बिल्कुल। एंड पैसिव में आपके पास होता है नाइबुल फाइल। यहाँ पे हम थोड़ा सा टेंशन में आए थे। ठीक है? नाइबुल फाइल का जो प्रिंसिपल है। ठीक है? सो जो जो चीज एक्टिव में डूअर है वो पैसिव में नाइबुल फाइल है। दैट्स व्हाट वी सेड। ठीक है? सो ही हेल्प्ड, ही वाज हेल्प्ड, ये एग्जांपल हमने की थी। अ, जो एक्शन कर रहा होता है एक्टिव में, ही, दैट इज अ डूअर। जिस पे एक्शन हो रहा होता है दैट इज नाइबुल फाइल। रूल्स वर सेम। It has to be naibul file has to be after and rafa, and it only comes with huwa and hiya. तो इसमें Outside to फाद भाई सॉरी जी। ये कह सकते हैं कि एक्टिव में आपका जो डूअर होता है इनसाइड डूअर, पैसिव में वो नहीं होता। नहीं, आप और क्योंकि ये जो इसको उठा नाइबल लें, फाइल है देखें। ये जी। नाइबल फाइल सिर्फ आउटसाइड के लिए नहीं यूज होगा या उसके लिए भी नहीं, नहीं, नाइबल नहीं, नहीं। नहीं? अब आप इस कफरा को देखें। ठीक है? जी। लेट्स टेक कफरा एज एन एग्जांपल। कफरा मींस ही डिसबिलीव्ड। डिसबिलीव्ड। ठीक है?
अब कफरा के बाद आप उठा लें इसको word यार सबसे ये कफरा है यार कुफरा के आगे लिखा हुआ है बट इट्स कफरा side of word okay kufira now जी, कुफिरा। this means he was disbelieved अब इसकी सेंस बन रही है कि नहीं इसको छोड़ देते हैं सही। ठीक है he was disbelieved इसमें एक्शन ही कर रहा था जी, फॉर डिसबिलीविंग इसके अंदर एक्शन ही पे हो रहा है सही, सही। he's a अच्छा, receiver of the action but there is a still हुआ inside it right हुआ जी, is still inside it जो हुआ कफरा के अंदर था that was the doer जो हुआ कुफिरा के अंदर है that is an ayable file सही, but ठीक, there is still a pronoun fail cannot exist without a pronoun बिल्कुल ठीक ठीक। है तो हम लोग थोड़ी सी आप एक ड्रिल करेंगे शायद उससे हमें आसानी हो इसको जरा समझने में मैं कुछ फेल्स लेके आया हूँ आपके आज इंग्लिश में what we will try to do try to fill up this table and we'll try to make a sentence in with each of these अब जैसे he cried है I want us to try to find who and what in the sentence when and where in the sentence how and why for example I'll do one thing so he learned Arabic okay, in Swindon quickly because he had an exam. That's the exercise we're trying to do here. Right. So I want us to just go through these fails and try to construct this type of sentence together and see what comes out. इससे कुछ चीजें clarify हो जाएंगी आपकी. ठीक है? So let's start with the first one. He cried. Who and what, when and where, how, why, anything that comes to your mind that makes this sentence complete. You can even tell me, oh, when and where doesn't make sense with this one. ठीक है? So he cried. What और who कोई fit हो सकता है यहाँ पे? नहीं। नहीं हो रहा. आगे बढ़ जाते हैं. When and where fit हो सकता है? He cried yesterday. That is when and where. Yes, yesterday. बिल्कुल. How and why? Loudly because he was Loudly. sad. Loudly Because he was sad. because he was sad. Because he had an Arabic class. Because he had an Arabic class. ठीक है? Because the ustad was strict. Okay. He ate. ये एक गेम होती थी, हम फोल्ड करते थे, हर बंदा अपना अपना लिखता था, आखिर में सेंटेंस बनता था, वो फनी होता था। हाँ वो बचपन में खेलते थे मुझे याद है पेपर फोल्ड I know. करके। 90s was the best time. अच्छा um, he ate who एप्पल और what भी की कर पे दें। सेंस बनती है एप्पल ठीक है when and where In the park. in the park how and why Slowly. slowly why He was lazy. He was lazy because he was. because he was lazy. It's making sense, right? He was lazy, fine. That's why he ate apple. He didn't want to cook anything. And he was outside. He was too lazy to go to the shop to buy something. He cried. He cried. Sorry, he carried, Carried. not cried. He carried. He carried heavy box. Food or food. Food. He carried a box. Chale. Mhm. Mm-hmm. He carried a box. From Amazon warehouse. Okay. From warehouse. Uh, Amazon की marketing नहीं करते. How and why? How? बॉक्स हेवी Effortlessly. होता है ना। हाँ। Oh yeah. चले, effortlessly. वाह.
क्या इंटेलेक्चुअल वर्ड मारा है जुनैद. अच्छा, why? आसान खत्म हो गया. है? Because he Because was strong. he was मजबूर, हाँ. Because he was he working. was working. He had no choice. Right? He had to. He read, I think it's clear, a book, Book. book. right? When and where, let's say in the library, Silent. right? Silently. Silently, because he had a test. ठीक हो गया. He wrote Letter. a letter When- Yesterday. Yeah. चल, yesterday पे जान हम लगा लेते हैं. Yesterday, how um, How? How can be quickly. Quickly. Say quickly, quickly. कर दो, हाँ. quickly, why? Because he was Uh, in a hurry. I want to get rid of the word because, as he loved writing, As he loved. right? Okay. ठीक है. He fell Fell. From the bike. हाँ. from the bike. From the bike. ठीक है. Location when होगा ये, where होगा ये, कि what में होगा? When और where में होगा. Time and place को सोच रहे हैं. Time and place. Bike तो place है ना. What did he fell from? Bike. Fell from what? Yeah, what में जाना चाहिए. कहाँ पे आना चाहिए? मुझे तो लग रहा चलिए है what इसको में आना चाहिए. चलिए इसको what पे लिख देते हैं. ठीक है. From the bike. सही है. From the bike. अब आगे बताएं. On the road. On the road. Badly. Badly. As he Was not careful. was not careful. ठीक है. He worried About the exam. about the exam All the time. all the time. All the time. Okay. Anxiously. Sorry? Anxiously. Anxiously. Okay. Because he doesn't like exams. As he hated exams. Right. Who doesn't? Okay. He came. He came From the market. From the market. Okay. this morning. This morning. Late. Late is not how. Late is kind of when. Let's say driving. Okay. Fast. Oh, sorry. Driving fast. यूं कह देते हैं इसको. Fast. As He was late. ठीक है. He washed Dishes. dishes. फिर dishwasher के Sorry, बारे में Junaid. बात Sorry, Dishwasher. जुनैद, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये तो हमने एक्सपोज क्या हो गई है. कोई बात नहीं, हमारी भी यही है. नहीं, ये कह रहे He हैं कि ये washed. बन सकता है, इसको पढ़े ही washed हो सकता है dishes. बिल्कुल. So he washed dishes In the kitchen. in the kitchen. Okay. Diligently. ये तो आप तजर्बे से बोल रहे हैं बिलाल भाई.
पता इसमें ना कहाँ मुझे मेरा पता तजुर्बा रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। Why? ना Because सिर्फ he आपने has डिलीजेंटली to. बोला है, आपने उसको because he दो दफा was बोला told to He has to. he was told because to do it. he was तो told. Okay. सही, ठीक हो गया। He folded ये तो कभी भी नहीं करते पर चल Clothes. लॉन्ड्री लिखने में क्या तो है? सारे सीक्रेट्स निकल रहे हैं ये तो। okay. Folded laundry बोलो, in the Mhm. room. the room. In the room, casually, Casually. right? As Clothes. he wanted breakfast. ठीक है ना? ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल ठीक सही। है, चलो आगे बढ़ते हैं। He taught Arabic. Arabic when and where online, Online. right? How slowly? Okay, why? Because Students. students are very Because slow. because the students were really smart. Okay. ये तो He categorically submitted. negation हो सकती है इसकी। हाँ जी, Categorically negation हो सकती है इसकी। categorical negation. He submitted Assignment. the assignment Uh, in the class In the class. um, On time? How? नहीं. on time. no. How? Oh, No, How? that would be when and where. हाँ. On time would be when and where. Okay. How Mm. would be It can be skipped by hand. lightly. yeah, politely? Why? As it was due. Politely करता है बस हर कोई। He ran He ran from the school. from the school Uh, from the school तो when where में नहीं आना चाहिए। 2 days ago. Where did he run from? School. School. Oh, when and okay. आ सकता है। It's the same scenario as the bike. Hmm. Yeah. 2 days ago. Very fast. Secretly, चले secretly. Hmm. Secretly, as he was bored. चले, good. ये सारे जो आपने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, इसका कई दफा मल्टीपल वर्ड्स हैं, कई दफा सिंगल हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप इसमें नोटिस करें कई दफा डायरेक्ट एक इसम आ रहा है, an apple, a box, a book, a letter, Arabic, but sometimes you have to use a preposition, about, from, right? Sometimes it's direct, sometimes it's making sense only with preposition, right? आपने ये भी देखा कि different types of details हैं, फ़ेल एक है, but details are of many types, who, what, when, where, how, why, and so on and so forth. All of these details are maf'ools, all of them. ठीक है, there are different classes of maf'ools, different types of maf'ools. जो who and what है, वो आपको पता है, it's bihi. This is maf'ool bihi. ठीक है, the when and where होता है, वो होता है maf'ool fihi. जो when and where का आंसर करता है। जो how होता है, वो होता है maf'ool हाल, बताता है how things happened. और why होता है मफऊल लहू।
इसके अलावा भी 2-3 होते हैं, बट लेट्स स्टॉप हियर। ठीक है? बट दे आर ऑल मफऊल्स। दे हैव ऑल द सेम रूल्स ऑफ मफऊल। दे विल बिकम नसब एंड ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स। ठीक है? यूजुअली मैं कुछ टिप्स आपको बता देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट बताता है आपको ये मफऊल कौन-सा है। यूजुअली कुछ चीज़ों में कुछ लॉजिक है जो मैं आपको बता सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मफऊल बिही के केस में अटैच्ड प्रोनाउंस टू अ फ़ेल आर ऑलवेज़ मफऊल बिही। सही। ठीक है? It will always be मफऊल बिही। जो आपका हर्फ ऑफ जर होता है, हर्फ ऑफ जर स्पेशली विद फॉर एग्ज़ाम्पल फी, फी का मतलब ही होता है इन। ठीक है? फी के साथ जो हर्फ ऑफ जर बनता है, इन द किचन, इन द कार, इन द मस्जिद, दैट इज़ यूजुअली अ मफऊल फिही। आपने स्पेशल मुदाफ्स भी पढ़े थे, राइट? स्पेशल मुदाफ्स वर isms which are always mudaf and they are representing time and space, when and where. So when you find an idafa with special mudafs, this is usually a maf'ul fihi. ठीक है? Idafa with special mudafs. This is maf'ul fihi. Hal and lahu are little more complex, so we'll leave them for now. अभी ये 2 आपको क्लियर होने चाहिए और हाल और लहू जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उनको टच करेंगे। अब इसका पैसिव से क्या ताल्लुक है? कुछ फ़ेल्स ऐसे हैं जिस पे आपको मफ़ऊल बिही मिला ही नहीं, राइट? इट डिडन्ट मेक सेंस फॉर यू टू हैव अ मफ़ऊल बिही विद देम। नेक्स्ट पेज। राइट? जैसे क्राइड था। तो जिन फ़ेल्स को मफ़ऊल बिही नहीं मिल सकता, दे कैन नॉट बी मेड पैसिव। बिल्कुल। ठीक है? दे आर ऑलवेज़ एक्टिव ओनली। और उसका सिंपल तरीका चेक करने का ये होता है मल्टीपल मेनी टाइम्स कि आप हु एंड व्हाट आप एक फॉर्मूला बना लें। आप कहें कि फॉर एग्जांपल ही लेट्स से यू हैव अ फेल एंड यू ऐड द वर्ड समवन और समथिंग इन फ्रंट ऑफ इट विदाउट एडिंग एनी प्रपोजिशन। ठीक है? इफ यू कैन दैट फेल कैन बी मेड मफूल, कैन बी मेड पैसिव। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे किया he folded someone or something laundry. We can add it. So this fail can be made passive. He fell someone or something मैं directly add कर सकता हूँ? नहीं, I need preposition. This fail cannot be made passive. सिंपल फॉर्मूला ये होता है। उसके लिए ऑफ कोर्स आपको फेल की मीनिंग पता होनी चाहिए टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। बट द प्रिंसिपल आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दिस मफऊल बिही थिंग, दिस मफऊल बिही इन एक्टिव और पैसिव सेंटेंस के अंदर इसका रोल समझ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मफूल होता है एंड इट्स द मोस्ट वाइडली यूज्ड मफूल इन केस ऑफ एक्टिव फेल्स एंड इन केस ऑफ पैसिव फेल्स। दिस मफूल बिही is a normal Doer. maf'ool. It's a normal maf'ool. No, maf'ool is not a doer. Now, Havi. Doer is a doer, right? And it's always nasab. It's like nasara zaidun. Zaidan. Nasara Zaidan. He helped Zaid. Now, this Zaid, who did he help? Zaid. This is maf'ool bihi. Okay? In case of active, it is a normal maf'ool. But if I change this same sentence, Nasara, sorry, if I make it passive, Nusira, अब Nusira means he was helped. I have to retain Zaid. अब मैं अगर इसको इस तरह लिख दूं, Zaidan,
Nusira Zaidan. He was helped, Zaid. Is it making sense? No. It's not making sense. But if I change it Zaid to Zaidun, would it make sense? Because what I have done is I've fired the inside pronoun and I've brought the outside one. जी. This is the naibul file that I've brought, right? Now this would mean Zaid was helped, right? क्योंकि उसको रफा में होना चाहिए क्योंकि वो. हमने उसको रफा कर दिया, right? Zaid was helped. Now, is this making sense? Yes? It is making. आप अगर इसको नोटिस करें तो आपने एक्टिव का मफूल भी ही उठाया और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया पैसिव के नाइबुल फाइल में. ऐसे ही किया ना? फिर से बोलता हूं. आपने एक्टिव का मफूल भी ही उठाया, somebody who was receiving the action in the active sentence. He helped Zaid. Zaid was a recipient of the help. Right? In the passive, when you wrote Zaid, he was helped Zaid. It did not make sense. Right? So, in order to maintain the same impact on Zaid, what you had to do, you had to make the Zaid a naibul file by putting it after and rafa. ठीक है? अब इसको जब आपने कर दिया, this became Zaid was helped. Now, in this case as well, who is receiving the impact of help? Zaid. Right. But in the active sentence, you know who is doing the help. In the passive sentence, you do not know who is doing the help. That is the difference. ठीक है? तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? आप मफऊल बिही उठा रहे हैं एक एक्टिव सेंटेंस का, उस मफऊल बिही को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन अ नाइबुल फाइल, इन अ पैसिव सेंटेंस. How to transform? Just make it after and rafa. That's it. So maf'ool bihi, कोई भी फेल जो मफ'ूल बिही नहीं ले सकता, cannot be made passive. फेल को पैसिव होने के लिए मफ'ूल बिही मैंडेटरी होता है. He should be able to take a maf'ool bihi. Because in the passive world, that maf'ool bihi is going to become its naibul file. कोई ऐसी एग्जाम्पल है फात पे जिसमें वो नहीं ले सक रहा मफूल भी ही? जी, अभी बना लेते हैं. For example, jalasa. Jalasa means he sat. He sat. अब jalasa, for example, I'll say zaidun कह देते हैं, zaidan कह देते हैं, ठीक है, zaidan. Jalasa zaidan. He sat Zaid. Does it make sense? No. So I cannot add someone or something after jalasa. Right? The who and what does not make sense. What did he sit? Zaid. Doesn't make sense. You see that? So इस केस के अंदर ये jalasa मफ'ूल भी ही ले ही नहीं सकता. यानी it cannot take a detail that is who and what. इसको यहाँ पे करके आप देख लें. इसको हम ऐड करते हैं यहाँ पे. कहते हैं he sat. He said what? आपको प्रपोजिशन चाहिए होगी एक. डायरेक्टली आप someone और something नहीं ऐड कर सकते यहाँ पे. But on the chair. On the chair, in the kitchen, in the office, you need some preposition to support this fail. Right? So let's say on the chair. On the chair yesterday. वो हो नहीं सकता पैसे Quietly. Well, As he was not. ठीक है. Now
because you Okay. cannot add a maf'ool bihi. Maf'ool bihi is a ism in nasab, basically. It's just an ism in nasab, like Zaidan, right? You cannot add it without adding a preposition. You will say jalasa, uh, uh, आप कहेंगे जलसा अला कुर्सियन, he sat on the chair, ठीक है? But you cannot say jalasa kursiyan, he sat a chair, doesn't make sense. You need some preposition before this maf'ul. हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं जलसा फिल मस्जिद, he sat in the masjid. That's fine. But this one is not maf'ul bihi. This is maf'ul fihi. When and where? बात पे ये कैसे कहेंगे ज़ैत सैट? आता हूं उधर। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि ये मेकिंग सेंस नहीं है यहाँ पे कोई? ठीक है। ज़ैत सैट कैसे कहेंगे? जलसा ज़ैदुन, मेक इट एन आउटसाइड डूअर, राइट? ज़ैत सैट। अगर आपके पास ज़ैद नहीं है तो ही सैट है, वो सिर्फ जलसा इज ओनली ही सैट, राइट? ही हैज हुआ and its past tense, and I've put a fi'il that is after and rafa, which becomes the outside doer because we are in the active world. पर हम ठीक है? इसको जुलिसा नहीं कर सकते। आप इसको जुलिसा करेंगे तो उसका मतलब बनेगा he was sat. Is it making sense? He was He was sad. sad, sad. या आप इसको कहेंगे जुलिसा ज़ैदुन, it means Zaid was sat. Is it making sense? ठीक है? जब फेल्स मफऊल बिही, बहुत सारे फेल्स ऐसे होते हैं जो मफऊल बिही नहीं ले सकते, उनको आप फोर्सफुली यानी पैसिव लुकिंग फॉर्म में तो ला सकते हैं, बट कॉन्टेक्चुअली एंड सिमेंटिकली दे विल नॉट मेक सेंस। ठीक है? तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फेल ऐसा है जो पैसिव बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता? उसका फॉर्मूला ये है कि यू नीड टू चेक कैन दिस फेल टेक अ मफऊल बिही। If it takes a maf'ool bihi directly, then it can be made passive. यहां तक समझ आ रहा है कुछ? जो जो प्रिंसिपल आपको समझना है वो ये समझना, सिंपल दो बातें समझनी है आपको। एक, हाउ टू फाइंड इफ अ फेल कैन बी मेड पैसिव। एक तो ये बात समझनी है आपने। दूसरा ये समझने, पहले इस पे आ जाते हैं। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, द फेल मस्ट be able to take maf'ool bihi, meaning who and what का आंसर फेल डायरेक्टली कर सकता हो, डायरेक्टली। ठीक है? इसका सिंपल तरीका ये है कि यू पिक अप द फेल and you add someone or something in front of it just to test. If it is making sense, then it can take maf'ool bihi. ये सारे फेल्स जो हैं आपके, he fell, he worried, he came, they require a preposition. He ran, they require a preposition. ठीक है? The message I'm giving you is, if a fi'l cannot take a maf'ool bihi, then it has no passive. और ये जो फॉर्मूला है, this is just a formula to detect if it can take the maf'ool bihi or not. ठीक है? थ्योरी अगर आपको समझ आ गई है, थ्योरी अगर आपको क्लियर हो गई है, ये वाली थोड़ी या थोड़ी सी कच्ची भी है, चले, एक जनरल प्रिंसिपल आपको समझ आ गया है,
तो with the practice इंशाल्लाह it will become very clear. ठीक है, आगे बढ़ जाओ यहाँ से कि मजीद इसको एक्सप्लेन करना है। कोई ठीक क्वेश्चन है, नहीं मेरा है? ख्याल में हाँ भाई, हम इसको थोड़ा-सा एक दफ़ा दोबारा सुनेंगे तो मेरा ख्याल क्लियर हो जाएगा। जी, आहिस्ता-आहिस्ता हो जाएंगी। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो होते हैं कंफ्यूजिंग। मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी देने लगा हूँ, उसको आपने ज़हन में रखना है। The fails that can be made passive, उनको कहते हैं ट्रांजिटिव। These are transitive fails. Fails जिनको पैसिव बनाया जा सकता है। कैसे चेक करूंगा? I'll take a fail, I'll put someone or something in front of it. And if it is making sense, then it's a transitive fail. Fails that cannot be made passive. These are intransitive fails. Intransitive fails. कैसे चेक करूंगा? I'll pick up a fail and I'll try to put someone or something directly in front of it. If it is not making sense, it is intransitive fail. Without proposition. Without proposition. I will not, it will be intransitive fail. ठीक है? जो transitive fails हैं, if you are interested, in Arabic they are called mutaaddi. अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी याद रहती है, it will help you. नहीं याद रहती, कोई बात नहीं। और जो intransitive है, उनको अरबिक में कहते हैं लाजिम। ठीक है? This is a terminology that is used for these two types of fails. बहुत से फेल्स हैं कुरान में जो कि इंट्रांजिटिव हैं, और बहुत से हैं जो ट्रांजिटिव हैं, मीनिंग दे कैन नॉट बी मेड पैसिव्स, और ओवर टाइम हम लोग उनको देखेंगे। ठीक है, अब कुछ एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पे जाते हैं जो हम लास्ट टाइम स्टार्ट की थी हमने, उसको जरा देखने की कोशिश करते हैं। नाउ इट माइट मेक मोर सेंस लिटिल बिट। ठीक है, द फेल इज युरसलु। युरसलु, this fail means he was sent. ठीक है, he was sent. इसका जो एक्टिव वर्जन है that is he sent. Can you put someone or something in front of it? Yeah, he sent a He sent a poker letter. card. Letter. Yeah. So this is a transitive fail, Transitive. right? It means it can be made He passive. said. ठीक है, so therefore you see a passive here. ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं इसका जो वर्जन होता है, let me just quickly check कौन सा वर्जन है ये, अरसला युरसिलु होता है, I believe है जी। So this is युरसिलु। This is युरसिलु। In the present tense, this is युरसिलु। ठीक है, युरसिलु means he sends। He sends। ठीक है, अब युरसिलु, अगर ये वर्ड शुआजुन हमें लास्ट टाइम मुश्किल लगा था, मैं कहता हूं रसूलन। ठीक है, रसूलन। He sends a messenger। ठीक है ना, यहां तक मैसेंजर वाज युरसलु रसूलन, he sends a messenger। अब इसी फेल को मैं पैसिव बनाऊंगा। ठीक है, कैसे बनाऊंगा? युरसलु, he was sent। ठीक है, रसूलन, Rasulun. he was sent a messenger। ना दोनों में डिफरेंस है अभी। ठीक है, मैंने अभी कुछ चेंज नहीं किया, उसका मफूल वैसे ही लगा दिया आगे। ठीक है,
Previous one was he sent a messenger and then he was sent a messenger. ठीक है? लेकिन अगर इस मैसेंजर को उठा के मैं रफा कर दूं, what changes? मैंने जी पिछले वाले का मफूल बिही उठाया और मैंने उसको पैसिव वाले का नाइबुल फाइल बना दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। ऐसे ही किया ना? हम्म, तो जो मफऊल बिही एक्टिव फेल का होता है वो ही नाइबुल फाइल बनता है पैसिव के अंदर। कोई और टाइप ऑफ मफऊल नहीं बन सकता, बिही ही बनेगा। ठीक? यहां पे कुरान में वही स्ट्रक्चर है। युरसलु, ही वाज सेंट। ठीक है? अब युरसलु ही वाज सेंट, रसूलन की जगह यहां शुआजुन है। शुआजुन का मतलब होता है फ्लेम। ठीक है? सो इफ युरसलु रसूलन was rasul was sent, then युरसलु शुआजुन would be a flame was sent. Right? So let's construct this. A flame was sent. अब ये बात भी आप नोटिस कीजिए, फेल इज अ प्रेजेंट टेंस, बट आई एम राइटिंग सेंट because that's an English problem. I cannot say send. इंग्लिश की ग्रामर ब्रेक हो जाती है उससे। ठीक है? दिस इज हाउ यू राइट इट इन इंग्लिश। अ फ्लेम वाज सेंट। पर बाद में आपने वॉज क्यों यूज किया? अ फ्लेम इज सेंट। ठीक है? इज सेंट। ठीक है? सही। Is या अब will be. इज या विल बी, बिल्कुल, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है? अ फ्लेम विल बी सेंट और फ्लेम इज सेंट। ठीक है? शुआजुन, अब हमें ये पता चल गया है, दिस शुआजुन इज अ नाइबुल फाइल ऑफ द पैसिव फेल युरसलु। चलो, ठीक है? या ये दो तो पिन डाउन हो गए ना, ये वाला और ये वाला। ठीक? अब मैं आगे बढ़ता हूं जब, तो मुझे यहां नजर आता है मिन्नारी। ये आपको पता होना चाहिए क्या चीज है। व्हाट्स हैपनिंग हियर? हरूफ उजर। क्लोजर फ्रैगमेंट है, सिंपल। हम्म, ठीक है? अब मैं आपको आपके एक पुराने लेसन की तरफ लेके जा रहा हूं जिससे आपको शायद कुछ चीजें याद आए। आपको मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन मुस्लिमुन मिन मक्का, मिन मक्का और अल मुस्लिमुन। अब मुझे ये पता नहीं है कि आपको ये याद है कि नहीं। मिन मक्का, याद है तो बताएं, नहीं याद तो बताएं। मुस्लिमुन मिन मक्का और अल मुस्लिमु मिन मक्का। जब अल लगता है तो वो लाइट हो जाता है ना। अम, फ्रॉम मक्का एंड द मुस्लिम फ्रॉम मक्का। इसकी ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करें। पहले वाले की क्या है? मुस्लिम लेट्स फ्रॉम ट्राई। मक्का। मुस्लिम फ्रॉम मक्का। दूसरे वाले की बनाने की कोशिश करें। द मुस्लिम द मुस्लिम फ्रॉम मक्का। फ्रॉम मक्का। इनविजिबल इज है कहीं पे? इनमें से द किसी में भी इनविजिबल इज है? द मुस्लिम इज फ्रॉम मक्का। सेंस तो वही बनती है द मुस्लिम इज, बट क्यों है इज? इनविजिबल इज कब आता था? जब आपको प्रोनाउन मिलता था, जब आपको पॉइंटर मिलता था, जब आपको हरफ नसब मिलता था, जब आपको मिलता था प्रॉपर फॉलोड बाय फॉलोड कॉमन। बाय कॉमन, ये जब आपको proper मिलता था followed by ब्रेक comma, हाँ इन द चेन। ठीक है? यही था ना? जी। तो
कहाँ कुछ कहीं पे मिल रहा है इनविजिबल इज? जी, प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन है अल मुस्लिमून में। लेकिन ये तो हर्फ है, हर्फ तो कॉमन और प्रॉपर होता ही नहीं नहीं, और मक्का भी तो है ना? जगह Isn't this a break in the chain scenario? अल मुस्लिमों का मिन के साथ कोई रिलेशनशिप है? नहीं। नहीं है ना? So that's why there is invisible is here. It's a break in the chain scenario. ठीक है? The Muslim is from Makkah. तो वो जुनैद जो सेंस बन रही थी और समझ नहीं आ रहा था वो ये है. It was a break in the chain scenario. ठीक है? That is why the invisible is. Now break in the chain तो यहाँ पे भी है ना? तो a Muslim is from Makkah, मैं यहाँ पे भी लिखूं? अब एक बात याद कराता हूँ मैं आपको. नहीं तो अभी प्रॉपर नहीं, हाँ सॉरी। तो अगर आप ब्रेक इन द चेन अप्लाई करें तो इज यहाँ पे भी बनता है ना? अभी इसके ऊपर होल्ड करें अपने थॉट को कि मैं इसको समझा आपको इसलिए रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू टेक यू बैक हियर. ठीक है? दिस इज अ रिवीजन यू नीड. अब मुझे एक बात बताइए, अ मुस्लिम फ्रॉम मक्का, अ मुस्लिम इज दिस पार्ट एंड फ्रॉम मक्का इज दिस पार्ट. Is from Makkah a bit more description about the Muslim? जी। क्या मुस्लिम के बारे में it is telling me a little bit more? Yes? जी। तो जो ग्रामेरियन की दुनिया होती है उसके अंदर वो कहते हैं यार ये तो सिफा हो गई, ये तो सिफा हो गई, क्योंकि इट इज गिविंग मी लिटिल बिट मोर, इट इज अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स सिफा. हम तो अभी एक एक वर्ड की पढ़ते आए हैं, properties should match and blah blah blah, but as we become seniors in Arabic, you're actually giving me little bit more information about this Muslim. So this is a potential sifa, right? So if I consider this sifa and I consider this Muslimuna mubtada too, which one is it? अगर मैं इसको सिफा कंसिडर करूं मिन मक्का को, तो मैंने लिखना है अ मुस्लिम फ्रॉम मक्का. अगर मैं मुस्लिम को मुब्तदा कंसिडर करूं तो मैंने लिखना है अ मुस्लिम इज फ्रॉम मक्का. So which one will work? That is the problem. ठीक है? यहाँ पे बड़ा क्लियर है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनविजिबल इज का रूल अप्लाई हो रहा है और हमें पता है मुब्तदा प्रॉपर होता है. हमें मुब्तदा की कैरेक्टरिस्टिक पता है प्रॉपर होती है, वो भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है. लेकिन यहाँ पे मुब्तदा इज कॉमन. तो फिर तो वो सिफा बन जाएगी. जब इस तरह कॉमन इसम आता है और उसके बाद कोई हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट आ रहा होता है, तो दैट इज कंसिडर्ड अ मौसूफ एंड सिफा टाइप ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है? अब इस केस में अगर आपने कहना हो अ मुस्लिम इज फ्रॉम मक्का, व्हाट यू डू, हमने ये किया था जब आप लोग छोटी क्लास में थे, भूल गया होगा आपको. वी यूज्ड टू मूव दिस इन द एंड. हमने कहा था कि व्हेन मुब्तदा इज कॉमन इट इज ऑलवेज मुअख्खर, डिलेड. कुछ याद आ रहा है? When मुअख्खर the या mubtada is common, it is always डिलेड. delayed, and that was the reason, क्योंकि डिले ना करने की वजह से वो कंफ्यूज करता था मौसूफ और सिफा टाइप के रिलेशनशिप में, राइट? ये बात क्लियर हो गई? वो फ्लैशबैक्स वापस आ गए कि नहीं आए? आ गए ना? वो चिंगारियां दिमाग में आई होंगी इधर से उड़ उड़ के. ठीक है? अब ये देखें, क्या शवाजुम मिन नारी इज द सेम सिचुएशन? सेम सिचुएशन नहीं है. दिस इज अ कॉमन इसम and min nari is from fire. A flame from fire. नेम इज फ्रॉम अगर मैं is लगाऊंगा तो मैं शुआजुन को मुब्तदा बना रहा हूं, which is not going to be right because it's common. If it was mubtada it had to be pushed out, right? या उसको उधर होना चाहिए. तो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं a flame from fire. That's what I'm saying. A flame from fire.
इस पूरे पार्ट। सो ये एक बकेट है कि नहीं है? उसको सिफा मौसूफ कंसीडर करें। जी, एक बकेट है ना ये पूरी। ये एक बकेट। Let's mark it one bucket. It means yursalu shawazum min nari. This entire bucket is a naibul fa'il of yursalu. A flame from fire is sent or will be sent. ये चीज क्लियर हो गई? ठीक। ये क्या है? एंड कनेक्टर। हर्फ ऑब्जेक्ट तो नहीं है? नहीं, क्यों नहीं क्योंकि है? आगे नोहासन इज नॉट हर। jar. Because nohasun is not jar. So nohasun is smoke. Nohasun means smoke. तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूं? और नोहासन का स्टेटस क्या है? रफा रफा। और वो कनेक्टेड है पिछले नारिन वाले पार्ट के साथ, राइट? शवाज़ुन नारिन से। तो क्या ये पूरी एक बकेट नहीं बन रही? Connector की वजह से। पूरी एक बकेट है ना? A flame from A flame from fire and smoke स्मोक। will be sent or is sent. ओके? हमें ये नहीं पता कौन सेंड कर रहा है, हमें ये पता ये किया जाएगा, राइट? युरसेलु अलैकुमा। अब यहां पे आ जाए, इसका तो आपको पता होना चाहिए, ये लास्ट टाइम भी बताया था। जी। upon you both। अपॉन यू बोथ। अब जब भी आप जुमला फेलिया की ट्रांसलेशन करें, यू पिक अप द फेल and then you pick up the file, then you pick up maf'ool, and then you pick up muta'alliq bil fi'l. In case of passive, you pick up fi'l, you pick up naibul fa'il, and then you have any maf'ool or any muta'alliq bil fi'l. ठीक है? तो आपने अभी फेल की ट्रांसलेशन कर ली, विल बी सेंट, फिर आपने नाइबुल फाइल को नेल डाउन कर दिया। नाउ द टर्म टर्न्स फॉर मफूल, देयर इज नो मफूल, सो देयर इज डायरेक्टली अ मुतअल्लिक बिल फिल। ठीक है? इसकी ट्रांसलेशन आती है upon you both। अपॉन बोथ ऑफ यू। ठीक है? both of you। A flame from fire and smoke will be sent upon both of you. Who both? This is Surah जिन एंड Rahman. इंसान। जिन एंड इंसान, जिन एंड इंसान। ठीक है? आगे क्या हो रहा है? फला तंतसिरान। ठीक है? तंतसिरान इज टू डिफेंड, टू डिफेंड योरसेल्फ, टू डिफेंड वनसेल्फ। ठीक है? अब इसके अंदर फा हमें पता है कनेक्टर होता है, हमने इसको पढ़ा है एज अ सो और देन अभी तक, राइट? तो हम उसको उसी टर्म में यूज कर देते हैं, सो या देन लगा दें, जो भी आपको लगता है। कल या इसको एज अ रिजल्ट भी कह सकते हैं, एज अ कॉन्सिक्वेंस, एज अ रिजल्ट। ठीक है? ला तंतसिरॉन, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज दिस वन? इसम। इसम? नहीं, ये तो कौन सी फेल कॉफेटेरिया में लेके जा रहे हैं जुनेद आप मुझे? है। तंतसिरानी सही है। प्रेजेंट है। प्रेजेंट टेंस। इज इट एक्टिव और पैसिव? पैसिव की बिगिनिंग किससे होती है? एक्टिव एक्टिव है। ये उसम। एक्टिव है। ओ Active। या उसम। पैसिव तो इन पास्ट एंड प्रेजेंट बोथ केसेस में ऊ से स्टार्ट होता है। ठीक है? दिस इज एक्टिव। ठीक, इट मींस टू डिफेंड वनसेल्फ। ठीक है? ला तंतसिरॉन, इज इट फॉरबिडिंग और नॉट? फॉरबिडिंग। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉरबिडिंग? नहीं, फॉरबिडिंग में तो वो लाइट हो जाता है। लाइटर हो जाता है। लाइटेस्ट हो जाता है। ला प्लस सेकंड पर्सन लाइटेस्ट, रिमेंबर? हाँ इज दिस लाइटेस्ट? नहीं, No। इसमें तो नून है। So if it is not lightest, then it's just a statement, right? So as a result, इसमें कौन सा प्रोनाउन हिडन है?
Tansarani. Ta beginning and ani ending. They both. They, पक्की Both. बात Two, like both. नहीं 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 है both, Both They- है तो Tansi. two. नहीं है नहीं तो टू ये सेकंड पर्सन होगा सेकंड पर्सन है सेकंड पर्सन Second person. यंसरू जी। यंसरानी यंसरूना वैसे एक जो यंसरूना। हुमा होता है फेमिनिन में वो भी ता से ही बिगिन होता है, राइट? तंसुरानी भी ता से होता है, अंतुमा भी ता से होता है, मैस्कुलिन फेमिनिन, राइट? जी यंसुरु यंसुरानी यंसुरुना तंसुरु तंसुरानी यंसुरना तंसुरु तंसुरानी तंसुरुना तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना अंसुरुन अंसुर। तो 3 दफा आता है ता बिगिनिंग एंड आनी एंडिंग। ये कौन सा वाला है? मैं ये ढूंढना चाह रहा हूँ। इज इट हुमा फेमिनिन और इज इट अंतुमा? अंत में होना चाहिए क्योंकि कॉन्टेक्स्ट की वजह से Very मेरे good. ख्याल से अंत में Very होगा। good. Common sense and context is telling you it cannot be too feminine. ठीक है? It has to be antuma. ठीक है? Second person. So as a result, you both, because it's second person, will not be able to defend yourselves. ठीक है? युरसलु अलैकुम अशवाजुम मिन नारी व नहस फला तंतसिरान. The use of passive in the Quran. होमवर्क आपका क्या है? आपने आया नंबर 39 और 41 को अटेम्प्ट करना है। ठीक है? 39, सूरह 41 रहमान आया नंबर 39 और 41 इसको अटेम्प्ट करें आप। ठीक है? इसके अंदर फयौमा इज़न इज ऑन दैट डे। ठीक है? डोंट वरी अबाउट दिस वन टू मच। यहां से स्टार्ट करें। ला युसअलु अन ज़म्बिही उन इंसुन वला जान। ज़म्बी कहते हैं सिंस को। ठीक है? इंसन एनी मैन, जान एनी जिन। ठीक है? युरफु he will be identified. मुजरिम, criminals or bad wicked doers be sima him with their marks. ठीक है? जी मैं इसका आपको इसका ये बेसिकली अखज़ा युखिज़ु टू टेक वाला फ़ेल है। बिन नवासी इज forelock from your forehead and al-aqdam is your feet. ठीक है? So try to decode this. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको क्लास में भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है? थैंक चले, यू थैंक यू वेरी मच। सॉरी फॉर रनिंग जज़ाकल्लाह। ओवर। अस्सलाम ओके जी, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।